ये OpenClaw है जिसने AI वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है। ये एक AI एजेंट फ्रेमवर्क है जिसमें आप अपने पर्सनल AI एजेंट क्रिएट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड अदर चैट्स। ये एक्चुअल में टास्क परफॉर्म करते हैं, नॉट जस्ट रिवॉर्ड सिंपल एज ChatGPT। ये है पीटर भाई जिन्होंने इसको बनाया है। ये इनका एक हॉबी प्रोजेक्ट था जो इन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में ही कंप्लीट किया है। ड्यू टू दिस शॉर्ट स्पैम इसमें थोड़ी सिक्योरिटी फ्लोज है, सो ये भी खुद सजेस्ट करते हैं कि डोंट इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड और सर्विस ऑन टू योर पर्सनल लैपटॉप, क्योंकि इसको सब फाइल्स एंड डेटा का एक्सेस है ऑन योर लैपटॉप। सो अगर आपका कुछ पुराना पर्सनल फाइल्स है, फोटोज़ हैं, सो दैट कुड बी मिसयूज्ड बाय मैलिशियस एक्टिविटीज़। कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज के आर्टिकल्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जो सजेस्ट करते हैं कि डोंट इंस्टॉल इट ऑन योर पर्सनल लैपटॉप फॉर नाउ। सो अगर पर्सनल लैपटॉप पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? विल इंस्टॉल इन ऑन क्लाउड, वो भी फ्री में। वी विल सर्च वॉल्टर, इट गिव्स $250 क्रेडिट फॉर फ्री सो दैट यू कैन यूज़। इसके साइन अप के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए और एक क्रेडिट कार्ड, सो दैट पीपल वोंट मिस यूज। सो उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई के लिए डाला है, बट या इसमें से कुछ चार्ज नहीं होता until you reach that particular $250 amount. So we will sign up with our email ID as you can see on the screen, and उसके बाद we will fill the credit card details. On the landing page you will see कि $250 as a credit हमें receive हुए हैं। Yep, on the right you can see यहाँ हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे and just click on the check boxes. I want to link my credit card with zero deposit, and ये $250 क्रेडिट हो गए। सो विल लॉन्च अ सर्वर नाउ, वी विल गो ऑन कंप्यूट के बाद में विल डिप्लॉय अ सर्वर। सेलेक्ट एनी रीजन जहाँ पे भी अवेलेबल हो इस प्लान के अकॉर्डिंग। सो आई विल सेलेक्ट टोक्यो, एज यू सी के बैंगलोर एंड इंडिया में दिस फ्री प्लान इज़ नॉट अवेलेबल। सो विल सेलेक्ट टोक्यो, विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर डिफॉल्ट सेलेक्टेड सर्वर 2 GB and 2 core and 8 GB, that is enough. इसमें will create a CentOS server or Linux version, you can give anyone. So just select 50 GB for now, that is more than enough for running our Clawdbot. We'll give any name or label to it and create it. Once it gets created, we will select from the drop down and we will spin up our servers. बाकी सब settings as default हम छोड़ देंगे, we don't need to fill those things. Click on deploy and आपका server ready to spin up. We'll wait for a few seconds. It will come. It will take around 1 or 2 minutes to spin up the server. And आपके पास में server की details आ जाएंगी like IP, username, password. And then we will proceed further. Let's wait. Till then you can like the video. Okay, it's running now. So click on the server. You will get the details. यहाँ पे IP, username and password you can see. So now we can connect the servers using these credentials और इसी पे अपना क्लाउड कोड डिप्लॉय करेंगे। Oh sorry, it's OpenClaw now. इतने सारे नेम चेंज होते हैं उसके। We'll run the command SSH username @IP to connect. ये टर्मिनल ओपन कर लिया है। We'll put IP now. Let it go. Yep. Let's copy and paste the password and boom, we are into the server. You are now connected to the server. So to install एक single line का piece of code है, or you can see एक single line है to install it automatically. It will do all the things by itself. सब dependency वो अपने आप ले लेता है। Just copy and paste this particular command on your freshly built server and we'll skip the part till it gets installed. Right, let's wait for a while to get it completed. Yep, till then we can set up Telegram. So we will connect our bot with Telegram. Search with bot father and जिसमें blue tick है सिर्फ उसी पे कनेक्ट करना। Click on start, then you get options. सबसे पहला ऑप्शन होगा न्यू बॉट का, just click on that. Now it will ask कि बॉट का नेम क्या देना है। Let's put रामू काका फैंसी मेम, यप, क्योंकि वही तो पुरानी मूवीज में कर देते हैं हमारा सब काम। अब बॉट का एक नाम देना है, राइट, जिससे वो यू कैन डिफाइन। लेट्स ट्राई आउट। दिस इज ऑलरेडी टेकन। आई थॉट यूनिक होगा बट काफ़ी लोगों ने पहले ही ले रखा है। लेट्स ट्राई अनदर विद अंडरस्कोर
दिस इज ऑल्सो टेकन. मुझे लगा मेरा यूनिक है, काफ़ी लोगों ने कर रखा है. लेट्स पुट सम रैंडम नंबर्स एंड ट्राई आउट दैट so that it will be available. Yep, so bot is ready now. इसमें token है, as you can see that is required to connect, right? And now yep, we will also connect MiniMax AI. So OpenClaw needs an LLM model to be connected and सबसे अब recent है और even free है for a week to try out. So we'll create an account on MiniMax with our email ID. Let's do that and we will get into the MiniMax account. इसमें कोई भी क्रेडिट या कुछ भी आपको पेमेंट की नीड नहीं है. जस्ट क्रिएट ए अकाउंट, फिल द डिटेल्स एंड इट्स फ्री फॉर अ वीक फॉर OpenClaw. लेट्स पुट द ईमेल ID. टाइप करने से थोड़ा आलसी हूँ मैं. लेट्स पुट द प्रोजेक्ट नेम. Yep. ये एक मेरी वेबसाइट है. आई विल नॉट यूज दैट मच. कभी इसका भी कुछ बनाएंगे. विल सी. Yep. So now it's logged in and you can see yep the account is being created and आपको कहीं पे कुछ पेमेंट या कुछ प्रोमो कोड लगाने की नीड नहीं है. विल गेट फ्री क्रेडिट. ओके, ये इंस्टॉल हो गया. सो इट सेज कि काफ़ी पावरफुल है एंड इट इज़ रिस्की. सो क्लिक ऑन यस, क्लिक ऑन ऑनबोर्डिंग मोड एज क्विक स्टार्ट because else for manually need to do separately. We'll go to select model में आप MiniMax पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे by clicking up and down. Yep, click on MiniMax auth then yep and set MiniMax M2.4 global. So it will give some configs और setup करने के लिए कुछ steps. Just wait for that. Come. Yep. So ये एक URL आपको प्रोवाइड करेगा. Just copy that URL, right, to get authenticated. We'll copy this URL, paste it in the browser जहाँ पे MiniMax का अकाउंट हमने क्रिएट किया था, ओपन किया था. Yep. Authorize it. Click on authorize and it's done. We will go back to the terminal now. Yeah, so इसमें model we will select 2.1 because that is the free one we will get from MiniMax. Scroll it down to 2.1, hit enter. Now we will configure Telegram bot जो token हमने generate किया था उससे. Let's put the Telegram bot token. We have this one. Click on it. It will copy to clipboard. Paste it here, hit enter. Yeah, skills for now we will not configure. We will skip that part because your bot could have different skills like browse करना, net को scrap करना और multiple चीज़ें. Will not let all those in this video. We will skip for now and it is completing its gateway. So you see within few clicks it's got up and running. Let's try it out. So TUI will use it on the Linux terminal itself. यानी पे we can try out it. Let's try it out if it is running. Yep. It's running as you can see. Wake up my friend, wake up. Initially it is a bit slow because first time जब spin up होता है तो थोड़ा slow respond करता है, but don't worry, within 1 or 2 seconds तो हो गए, like 4-5 seconds it will start responding to you because initial setup it will take slight longer time. Yep, here it responded to our queries. Let's check it out कि कौन सा LLM यूज़ कर रहे हैं. We have configured MiniMax 2.1 that is free for a week to be used. So तब तक we will explore all the functionalities and what all thing we can do using OpenClaw. We will make some agents in upcoming video how we can use it. Yep. So it's using MiniMax 2.1, right? And it is responding without sending a single penny. Yep. Now let's try out through Telegram bot.
जो क्रिएट किया था हमने हमारे रामू काका. ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट इट गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस कि आपको फर्स्ट टाइम के लिए अपना टेलीग्राम पेयर करना होगा विद OpenClaw, एंड उसकी कमांड भी आपको नीचे दी हुई है लास्ट लाइन. सो वी कैन डू थ्रू दैट. लेट्स गो बैक टू दैट. बिफोर दैट लेट्स ऑल्सो चेक आउट हाउ वी कैन यूज़ इट थ्रू UI. काफ़ी सारी ट्यूटोरियल वीडियो में आपने देखा होगा कि UI is also available to that. So click on this OpenClaw gateway status and give you all the details कि किस पोर्ट पे रन हो रहा है, किस IP पे रन हो रहा है, and how we can access it. Right. Let's try out the next dashboard command. ये सारी commands आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे. Right. So this is how you can access it. Just click on SSH, just copy paste the SSH command before that. Yep. Let's copy it into new terminal and run it so that we can access it through our local or 127 IP port. Let's go and copy and paste the password, and it will set up a tunnel between your local laptop और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है. फिर उसके बाद आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली ऑन योर लैपटॉप. सो आई थिंक इट शुड बी डन नाउ. लेट्स ट्राई आउट. कॉपी एंड पेस्ट द URL. लेट्स सी. ओके, इट्स ओपनिंग बट एक एरर है, अनऑथराइज्ड और गेटवे टोकन मिसिंग. सो वी हैव कॉपीड द रॉन्ग URL. ऊपर वाला URL वी विल कॉपी जिसमें टोकन भी है. राइट. Let's try that out. Hit enter and boom. जो आपने वहाँ chat किया था, that all chat are now here, and you can also use and configure different settings through this particular dashboard as well. Let's try out one command if it responds from this dashboard as well. Yep, here it comes. Nice. So command prompt से रन हो रहा है, आपके डैशबोर्ड से रन हो रहा है. नाउ लेट्स ट्राई आउट द टेलीग्राम बॉट. टेलीग्राम बॉट के लिए विल कॉपी एंड पेस्ट द लास्ट लाइन. OpenClaw पेयरिंग अप्रूव टेलीग्राम एंड द कोड पेयरिंग कोड विल रन ऑन आवर टर्मिनल जहाँ पे OpenClaw रन हो रहा है. लेट्स हिट एंटर एंड इट्स अप्रूव्ड. सो नाउ वट एवर वी टाइप हियर इट शुड बी अप्रूव्ड. Let's try to do start again. Let's see. And it should be working now. See, Ramu Kaka is typing. Ramu Kaka थोड़ा slow type करते हैं. जंजी नहीं है ना. Come on, Ramu Kaka, respond. How things are working. Yeah, hear you. So Ramu Kaka is also connected through Telegram bot. So your setup is ready. Thanks.